this. Okay. Okay. So I am starting. Okay. So in the previous class, we have studied about the basics of mineralogy and crystallography. So as of now, we are studying the course Evolution of Earth and Life. So tectonics and geodynamics is the most essential part, okay, for uh, studying the earth science, or it also tells us about how our planet earth have came into existence, right? So all of you guys can hear me, na? Yes, sir. Okay, okay, okay. So so if we start from the very beginning, uh, can you all tell me, in the first place, how the earth has been created? Do you all know? Have you heard about the term big bang, right? Yes, sir. Okay. So, can you tell me what is the Big Bang is all about? I mean, how the Big Bang started? Sir, first of all, there was a high denser small particle exist which Okay. further burst and then uh, creation of dark age after the dark age faster appear. और सर ऐसे ही Okay. Okay. uh, So, okay. So, from this, we can say that the processes, let's say the Big Bang or the nebular hypothesis, have been started from a single point, which point is known as the singularity. So, at this point, there was nothing actually, nothing existed beyond this point or before this point, and after this point the creation of elements have taken place, right? Now, in order to study the tectonics and geodynamics, we have to first know how it all have started at the geological point of time. So so beginning this lecture on tectonics and geodynamics, we know that there are two terms that basically governs. That is, first term is tectonics, right? This tectonics term means architecture, and the geodynamics refer to as the processes that governs the architecture, right? So the tectonics and geodynamics tells us basically about the construction of the mountain belts, these ridges, or this entire earth. We actually will study about how the architecture builds upon, and what are the processes that builds this architecture. So we will consider the earth as our home, right? How we build a building, our houses. There are several processes through which we can build a house, right? By uh, by construction, first of all we will just stack the bricks one by one, then we will cement it. Similarly, we will study how the earth has been created in the first place. So in this course, tectonics and geodynamics, we will study about how these processes have been initiated at the first place. So we all know there are planetary system in our Milky Way galaxy, right? You all know about the planetary system.
Anyone? Sir, can you please repeat the question? You know about the planetary system, right? In our Milky Way galaxy, in which the Earth is placed upon. Yes. Yes, sir. Yes, yes. So we will study this planetary system first. How the planetary system has came into existence, right? So we know in this planetary system there are some inner planets and there are outer planets, right? The inner planets are the terrestrial planets and the outer planets are the Jovian planets. Okay. So by reconsidering into the history of these planets, we will go back into the geological time. So this all began about 4.6 billion years ago. As we all know, after the Big Bang, or from the extension from the point of singularity, so the first elements were created by the process of nucleosynthesis, right? Now we know that the elemental parts were discovered, or the elements were created from the cosmological Big Bang. Now, after this Big Bang, when the elements were created, what we know. So, if any elements are created at first, then the element will try what the elements will try. They will react with other elements to form a certain compound. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay. So, similarly, we know that in the cosmos there is no force other than gravitational force, because you all know that if we want to shift a particle from one place to another, we need a medium, right? We need an external force to move that particle. So for an example, if we want to move a stone, or if you want to move any kind of particle, you use an external force. To move a stone from one place to another, or to move a rock from one place to another, we need such agents, right? It can be water, it can be air, it can be glacier. So these are the agents which are used to move certain particles. But in the cosmos there were no such medium, right? Because in the very big cosmos, at the dark cosmos, you will find nothing to move a particle. Then how did the particles have moved so that they can stick to each other? So the answer is very simple. They have moved by the very gravitational force, because gravity is the important force that have acted upon the particles or such any materials. So as we know, as we progress, the huge role has been played by the gravitational force. Now, due to this gravitational force, the particle, let's suppose the particle A and the particle B, have moved towards each other. So for an example, if the particle B has a bigger mass than particle A, then what particle B will do? Then particle B will tend to attract the particle A towards itself, right? And there will be a point when there will be a collision between these two particles. And in during this procedure, there will be a conversion of another kind of energy. We all know when there is something in motion, that is, uh, if we try to this move this point A, and from this point A to this point B, there will be a particle motion from A to B, and during this particle motion there will be a kind of energy which will be involved. And what this energy is called? Kinetic energy. Exactly. Kinetic energy will play a huge role, because as I have told you earlier, that the gravitational energy will play a very important role for the movement of these two particles. Then there will also be a transition or the transformation of this gravitational energy into a kinetic energy, right? So there will be a transformation of this towards a kinetic energy. Now, as we all know,
when there will be a kinetic energy, this and from the law of conservation of momentum, I think you all know that energy can neither be created nor be destroyed, but we can transform or convert this form of energy from one form to another, right, guys? Yes, sir. Okay, now when there is available kinetic energy in our system, now we are considering here the system as the entire cosmos. We will take this entire cosmos as our system, because this entire phenomenon has been occurring all over the cosmos, right? Because we only know about our own planetary system, our solar system, but this kind of solar system may even exist in this planetary cosmos, in these billions of galactic systems, right? But we are not sure how many galaxies or how many planets are even there, such as Earth, because this tectonics, the process of these tectonics and geodynamics are a very peculiar and a robust process which exists in only in our planetary system, that is Earth. So coming back to the point, uh, there will be sufficient kinetic energy if there will be huge numbers of elements are created, because as I have told you, these elements have been created by the process of nucleosynthesis. So what do this nucleosynthesis process is? This nucleosynthesis actually talks about the fusion as well as the fission processes. So you are all aware about the fusion fission process, right? In the um, chemistry classes, you all have done what is fusion or fission. So you don't know, Ankit, you don't know about fusion, how the elements formed. Okay, okay. So fusion is, so let's suppose, what is fusion and what is fission? We know that if any elements, there are, you all know about isotopes, because in the previous class only you were all giving answers about what is isotopes and isobars, right? So as there are different isotopes of elements, so what this fusion is, so let's suppose there is an element A and there is an element B and there is an element C, right? Hello? Yes, sir. Yes, yes, yes. So yeah, yeah. So as I have told you, so let's suppose for element A, there may be isotopes for this particular element A. The isotopes may be A of, let's suppose A of 1. The second is A of 2. The third is A of 3, right? Okay. So for this, similarly for this element B, there could be many more isotopes for, let's suppose B double prime, for suppose B triple prime, let's suppose. This is an arbitrary we are taking. And for C also, there could be multiple number of isotopes. Okay, I am not mentioning, but let us assume that there should be a multiple number of isotopes, right? Now if this isotope of A, let's suppose A3, and this isotope of A2, if these two isotopes or any two isotopes or any three isotopes, let's combine A3, A2, A1. If these three combine with each other and if they produce a different kind of isotope, different kind of elements, let's say AA, this element has created by the process which is known as fusion, right? And it's a nuclear process. So for an example, you all know about the element hydrogen, right? Anyone? Yes, sir. Yes. So and we also know that there is an element helium. So this hydrogen and helium, they can be, obviously they can be correlated, because the hydrogen atoms, and we know that there are atoms inside this hydrogen, because the hydrogen contains only one, and there are several isotopes of hydrogen, that is deuterium, tritium, right? Yes, sir. Yes.
So these isotopes actually react with each other. Okay, these atoms uh, within this single hydrogen, actually they try to react with each other and they form a new element by combining by nuclear process known as the fusion, and they give rise to another element which is known as helium. So we know that the helium is represented by the atomic number 2, right, in the periodic Yes, table. sir. Yes. So this way the fusion process works. So the idea about this fusion process is clear to all of you. I think it must be clear to all of you. Yes. Now, so coming back to the point, so this from these processes, as these fusion processes, as new and newer elements have tend to be created in the uh, tend to be, yes, and fission is just opposite to that of fusion. When when an element breakdowns and forms some smaller elements, or from the combination of a very big element, that process is known as fission. Okay. Yes. So you are asking, Gautam, you don't know about the isotopes and isobars. I think these are very basics of. Okay, I will explain. Okay. Okay. So what are isotopes? Basically, isotopes are very distinct species. Okay, these are also nuclear species of the same chemical element. Okay, Gautam, Ankit. Yes. So, for an example, hydrogen. Hydrogen have different isotopes, that is deuterium, tritium, right? So the atomic number are same, but the mass number is different. So these are isotopes. Okay, and isobars. In case of isobar, suppose the elements are different. It may be, and for an example, not hydrogen. Yeah, it may be chlorine, it may be argon, right? But if the nucleons, that is the mass number is same, there may be a mass number of chlorine for 40 and for argon is also 40. Okay, so the atomic number tends to be different, but the mass number tends to be the same. So these are isobars. Okay. Yes. So coming back to the point. Okay. Yeah, where I was there. Yes. So as there are elements have been created in the solar system when first introduced, so as different elements are created, so there will be collection of different particles throughout this entire mass of the cosmos, right? And when the elements will certainly tend to form, then there will be several different compounds also which will form. Okay, and when these several compounds will form, they will try to take the very bigger space. I mean, they will actually capture the entire they will try to capture the entire region of the cosmos. And when this nucleosynthetic process have first initiated from the very first moment, and when these elements, then the compounds, they first created, and by slowly and slowly, after the creation of the elements and compounds and other major particles, the crystals tends to form. Okay, and by the aggregate of crystals, several minerals formed in the cosmos, and each and every mineral are constituted of different kind of elements and having different masses. And the bigger masses and the smaller masses, they can be correlated by a certain amount of or by a certain principle or certain process. That process is governed by the gravitational energy, and slightly this gravitational energy have started to convert itself into the kinetic energy. Now tell me one thing: if there is a kinetic motion between two particles or two materials, and when the
two particles or the two materials are collided with each other, then there will be a production of another kind of energy, right? Can you tell me what that energy is? You all know when you rub your hands toward with one with the other, then there is a frictional motion, and due to that friction there is a certain kind of heat which has been produced through your hands, right? Anyone? Yes, am I Sir, audible? sir, can you please repeat the question? Okay, my question was, see, so due to the conversion of gravitational energy, so and when there is a motion between the particles, there is a transformation of gravitational energy to towards the kinetic energy, and kinetic energy is represented by half mv square. So similarly, if there are two particles, when they are in motion, they are pulled out towards each other due to the kinetic energy, because there is a motion, so kinetic energy will play a very important role, right? So when the two particles will collide with each other, then the kinetic energy will transform into another kind of energy. Can you tell me what is that energy will be? सर अगर दोनों पार्टिकल अगर स्टेशनरी स्टेट पे हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डेवलप हो जाएगा. नहीं, Uh, no, no, okay, okay, yes, there will be a potential energy because the kinetic motion will stop, but there will be another kind of energy which will generate from the kinetic energy, because there is a very impact, the collisional impact will be great, right? Because we are not talking about just on an elemental scale. Can you understand what I'm trying to tell? yes, sir. So what kind of, so can you can do this experiment, right? So just take your two palms, right? The palms of your two hands, just rub it. So what kind of energy it will generate? It will generate a heat energy, right? Yes, sir. Okay, now let's rethink it. Yes, Munu, let's rethink it. Okay, when you are Yes, sir. rubbing your hands, okay, and now this there is a sort of friction between the two palms of your hands, right? Yes, sir. Now if I stop the rubbing of my palms, so now it is at a potential energy, right? But when I will again Yes, start sir. moving it, it will be a kinetic one, right? Yes, sir. Yes, Now sir. due to this kinetic energy, a heat energy is also being produced at the same time. Yes. Yes, So sir. this exact phenomenon, because I am just giving you an example with the rubbing of my palms, but if you take, or due to meteorite impacts, let's say when meteorites tend to struck the surface of the earth, there is a huge amount of heat is being produced due to that impact, right? And how the heat is basically generated, that heat energy is nothing but the conversion of the kinetic momentum into the heat itself. Okay, now that same phenomenon has occurred billions of millions of years ago. Okay, so when the elements first started or the collided with each other, there was a transformation from the gravitational energy to the heat energy. So this point is clear or not? Yes, sir. Okay, okay, now hmm, now we know that the planets, there is a planetary system. There are certain planets in our solar system, right? And we all know the planets are rotating. Okay, so do you all agree or not, the planets are rotating? Yes, sir. Okay, and there is a bigger nucleus which is the sun. So when these processes or this phenomenon was occurring at the very beginning of the geological time, so due to this conservation of energy and the process through which this occurred is known as the accretion. Okay, now due to this accretion, so the heat energy tends to be just shuffled in the core of our solar system, very core of our solar system. The heat energy has tend to be concentrated at the very core of the solar system. Okay, and when the heat is uh, subjected to directly to the core, then in the outer parts
uh, begin to cooled. Okay, so when the outer part begins to cool and there was a hotter core inside, there is an another kind of interaction force started to build up. Can you tell me what this force is? If towards the core it is hotter, and if it is colder at the outer parts, then I think there will be a contraction between the two, the hotter part and the colder part. Would you all agree or not? Yes, sir. Okay, now as of thinking, if there is a hotter core and if the parts at the outer side of the solar system is bit colder, then due to the, and we all know if there is a heat flow, or if there is heat in any system, let's say if there is heat in any system, or if a system is fairly hot. So for an example, if a system is fairly hot, then we can tell that the system is well mixed, right? The system is well mixed. Now if the system is well mixed, we say that system is a homogenized system, right? Or it tends to rather homogenize, right? So do you all agree? So by taking a saucepan and if you add some sugar to it, at first, at initially, when the temperature of that water in the saucepan is less, then the sugar are not well dissolved. But as you just raise the temperature of your oven and you just stir a little bit, then you will tend to find that the sugar is little by little is dissolving in the water, right? So the process by which sugar is dissolving in the water is known as homogenization. You agree? Yes, sir. So the mass of the sugar is basically, so basically sugar has also its mass. So the mass of the sugar is also dissolving within itself as you are rising the temperature, right? So similarly, the sun contains the majority of the mass of the solar system. That is why it is said that the sun contains about the 99% mass of the solar system, because the system is a hot system and it is a well mixed system, right? So my question is, what happened about the angular momentum? Can you all tell me? So what happened with the angular momentum? So if 99% of the mass is being concentrated at the solar system, or the core of the solar system, that is the sun, so what will happen with the angular momentum? Omega. Munu? Yes, sir. So सर angular, yeah, 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 please. सर एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा या फिर Yes, what will happen with the angular momentum? Because we know, suppose if there is an hotter core, and if अगर outer parts में तुम्हारा colder part है, और inside the core if it is hotter, then it is sure that there will be some kind of a circular motion will be developed, because from the core, the heat will be tend to distribute towards the colder part, and the colder denser material will try to engulf the hotter part, right, Monu? यस सर यस सर So there will be some kind of circular motion, and due to that circular motion or that circular momentum, there will be a phenomenon of angular momentum, right? यस सर And that's why all the planetary bodies rotate. Do you agree? यस सर यस So सर so from सर this, इसके बाद भी सर yes, yes, सर और भी सारे हमारा जो होता है ना दो फोर्स सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है yes, exactly, yes, yes, go on. सर इसलिए तो सर ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से सर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता Exactly, exactly, and then please go on. सर इसीलिए वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है Exactly. Now as you have already given me the answer, that is जो मैं तुमसे पूछना चाहता था, so that is the angular momentum is tend to be 98% of the angular momentum is tend to be redistributed among all the planets. Okay, but
the our sun, that which is the main core of the solar system, has a very little angular momentum. Only 2% of the angular momentum is being conserved within the sun, and the rest 98% of the angular momentum has been redistributed of the planetary bodies. So now I think, do you know the reason why the planets rotate and tends to revolve and rotate, right? Yes, sir. Okay, now so the one of the most important part about the elements is, so we what we do in our earth sciences, what we do is we basically study the meteoroids, right? And what kind of meteoroids? That is the chondrite meteoroids, right? So can you tell me what are chondrites, or do you know about the chondrite meteorites? Yes, sir. Okay, थोड़ा थोड़ा हाँ. okay, please go on. सर कॉन्ट्रैक्ट वो जैसे जिसमें स्पेरियल होते हैं, वो सर Okay, स्पेरियल के कंपोजिशन सर से एफी हो सकता है या फिर निकेल हो सकता है या फिर सिलिका हो सकता है. okay. Students, Ankit is telling me to tell me in Hindi. So, because I think he is having some problem with the language English. But as I have instructed to take this class is English, so मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलूँगा, because but I have to majorly take this class in English. So, do you have any problem if I use Hindi? Anyone? At sometimes? नो सर. Okay. But please, you have to understand that I have to take this class in English, Ankit, because I have instructed from NPTEL, IIT Madras. So, but I will try to convey you as much as possible. Okay. If there is any problem, you can ask me and stop me. I will ready to repeat the portion for you. So, so as we are talking about chondrites, so why we study chondrites is the chondrites gives us evidences about the formation of the solar system, right? Because there is no direct evidences about this formation of the solar system or the planets, because we just cannot go to or climb up the space and we can just take a sample and we cannot study in the laboratory, right? So do you all agree, I think, what I am trying to tell you? So for studying the solar system, there are two convenient ways. So one way is from the spectral studies, okay, and another is by the study of the chondrites. So uh, if you don't know what are spectral studies, so by spectral studies I mean, that is, so you all know there is a photosphere which is encircling the sun, right? यस सर. So the photosphere radiate some kind of energy, okay, and from the spectral studies we try to catch the particular wavelength for the particular energies, and from the particular wavelength we can actually get the elemental composition of the sun. And as we get the elemental composition of the sun, it fairly gives us data about most of the elements. Why it gives us most of the elements? As I told you that the sun is very hot system, right? So the inner core of the sun is also very hotter, right? Now if a system is fairly hot, then it will readily mix up its constituent properties within itself, and as it mixes up its constituent properties, the system will tend to homogenize. Now ये जो fission और fusion reaction है, ये this fission and fusion reaction actually is a continuous process from the very first day when the sun has been created, okay? And due to this fission and fusion reaction, simultaneously the elements are also being generated inside the core of the sun. So जो तुम्हारा हाइड्रोजन था, फिर हीलियम है, फॉर एंड अप टू दिस हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम एंड दिस, you will go on the periodic table, जो elements है periodic table के, this boron, carbon, nitrogen, oxygen, it will tend to be generated inside the sun. And as the system is fairly homogenized, so क्या होगा, from the core towards the outer part, from to the photosphere, this element will be in a cyclic or convecting process.
as the system is a well mixed up system. Okay, so ये जो photosphere का अगर तुम अगर एक spectral study करोगे from any kind of remote sensing techniques or from the satellite studies or from the hyperspectral studies, you will know about the composition of the sun. Okay, and we know that 99% of the mass is conserved within the sun. It means that the 99% of the major constituent of the solar system is hidden inside the sun. Okay, so if we study the composition of the sun, we will get to know about the composition of the planets. So do you deny or do you agree with my statement? Agree, sir. Okay, okay. Now, as from the spectral studies, by receiving or the studying of the photosphere of the sun, it probably gives us the bulk composition of the sun. Okay, it probably gives the bulk composition of the sun. Now, if we get the bulk composition of the sun, so it is very also easy to find about the bulk composition of our planet Earth, right? And this is the reason why we study the chondrites. So yes, you are right, Munu, or anyone can answer. In the chondrites we basically see the chondrules. Now what are these chondrules particles? So basically we know meteorites are of three types. One is the iron meteorite, second is the stony meteorite, and third one is the stony iron meteorite. ओके, नाउ ये जो हमारा कॉन्ड्राइट मीटियोराइट्स है, ठीक है, इन दिस कॉन्ड्राइट मीटियोराइट्स इट इज composed of three minerals most importantly. Okay, and it is a primitive meteorite. Now what are the three minerals in the chondrite, can you tell me please? Anyone, if you सर know? मिनरल का तो सर सिलिका हो जाएगा एक. Yeah, obviously silicon is the major constituent, but yeah, सर ये आयरन एंड निकेल. हाँ ये सब तो रहेगा, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल, ये तो तुम एलिमेंट्स बोल रहे हो, यू आर करेक्ट दैट दीज सर एलिमेंट्स. सर 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 ओलिविन रहेगा, यस यस, पायरोसिन रहेगा, ये ऑलिविन, ओलिविन रहेगा, पायरोसिन रहेगा. एग्जैक्टली, एंड सर थर्ड वन सर अभी याद नहीं कर पा. okay, okay, that's very great. Olivine will be a one constituent particle, and the second and third constituent particles are the your two types of pyroxene, that is a clinopyroxene and an orthopyroxene. Okay, so these, so can you just recall these three constituents are very important, or are very easily found in our planet Earth? What is that? What it resembles? So does it looks like a composition of the peridotite, right? यस सर. Yes, यस. because the peridotite is an ultramafic rock which is chiefly made up of olivine and pyroxene. Now, and we know the most of the earth constituent is in the mantle part, right? And mantle is chiefly made up of mafic and ultramafic minerals, and peridotite is one of the important rock that constitutes this mantle. Okay, so now, so there is one clue, that is we get the chondrites, and from the chondrite we can also find that it resembles the composition of a peridotite. So slowly it is resembling the composition of our earth. Now another important uh, criteria is the texture, right? Because texture is very important in case of identifying a mineral or a rock, let's say. Now what is a texture? Can you tell me what is the definition of a texture? So the mutual relation between the grain to grain. Yes, it's a grain to grain relationship. Grain to grain relationship means, it certainly means that how a grain, let's suppose there is a mineral grain A and there is a mineral grain B, and in the periphery A and B there is a mineral C. So what is the
relation between A, B, and C actually tells us the texture of a particular rock or a mineral or a interrelationship, right? That is how a mineral is bound to each other. How a mineral is bound to each other to form a rock. Now, by taking exclusively of chondrites, when this chondrite have been studied, it resembles a texture of a clastic sedimentary rock. A clastic sedimentary rock. Now, what do you mean by a clastic sedimentary rock, or what it implies basically? Because in our earth, what we have seen, we cannot see this clastic sedimentary rock, right, in a peridotite, because peridotite or any other metamorphic rock or any other igneous rock, we are supposed to say, we cannot find sedimentary textures, right? We can see Yes, sir. granoblastics in a metamorphic, we can see porphyritic texture in igneous rocks, right? But we cannot see a sedimentary texture. But as we know, but I have studied a chondrite meteorite, a thin section of chondrite, and I have seen olivine and pyroxene, but the grain to grain relationship in case of a chondrite is resembling that of a sedimentary rock. So if you are seeing a sedimentary texture inside a chondrite, so it only means one thing, that as the chondritic meteoroid is derived from the outer space, so it has been approved or channelized by cosmic sediments. So chondrite is nothing but aggregate of cosmic sediments. And I think you all know the term differentiated and undifferentiated, right? So the chondrite meteoroids are also classified as the undifferentiated meteoroids. Now the reason is very simple why they are undifferentiated, because they are a cluster of sediments, cosmic sediments, or a clastic sediment. They resemble like a clastic sedimentary texture. That is why they are undifferentiated meteoroid. Because sedimentary textures are all are kind of textures which are available readily available to sedimentary rocks, and sedimentary rocks are the rocks which are does or which do not exceeds rather let's say which do not exceeds a temperature condition of 200 degrees celsius, right? And if it doesn't exceed the temperature condition of 200 degrees celsius, then there is fairly no chance of mixing up the sediments, or there is no chance of mixing. So there is basically what I am trying to impose is that, or what I am trying to tell is that there is no chance of differentiated in case of chondrites. So if it is not been differentiated, it means the if so if we rethink it this way. So for an example, if there was a mixture, okay, and if there is a temperature difference, and if uh, the element A has settled at the bottom, and if above that the element B is above the top, and there is another layer of C, it means that these have been stratified, or these have been differentiated with each layers. Okay, so in and this is only possible when there will be a temperature gradient. At different stages of temperature, there will be different layers. So these are differentiated terms, but undifferentiated means it will be as a whole. So, and this is only possible if the textural relationship is of a clastic sedimentary rock. Means uh, it is just lying on a matrix and nothing else. It is not chemically bonded or reacted very tightly or firmly with that of another particle. So do you all agree with me or not? Yes, sir. Yes. Now, as it is an undifferentiated, so it has not been differentiated, so it holds the
primitive composition of the solar system. Because if it has been mixed, then we don't know yet, then that was impossible to tell that at what point that chondrite have been created, the elements in the chondrite at what point they have been created. As they were undifferentiated, they were only bounded like a clastic sedimentary textures, like a cosmic sediments. It is easy to tell that what are the primitive, or they actually resemble the primitive composition of the solar system. Now, two studies have been taken. सर सर Yes. सर थोड़ा डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड के बारे में सर थोड़ा और बताएंगे कि Okay. थोड़ा समझ नहीं आया. Okay. Differentiated means, so for an example, Earth. Earth. What is Earth? Earth is a differentiated body. Why? Because you know the elements have been formed by the process of the nucleosynthesis, right? Now, so hydrogen, helium, and it will go on to heavier elements such as iron, magnesium, and nickel. ये सब form करते रहेगा, right? They will tend to form from by a series of lighter element to heavier elements. Now, if this series form from lighter to heavier elements, so earth का जो core है, it is made up of iron and nickel, right? Yes, sir. So when the earth initially formed as a hot ball, so at that time there was no core or mantle, right? But as time goes on, जब जब तुम्हारा टाइम पास ऑन होते गया, सो द जो एलिमेंट्स है, दे हैव स्टार्टेड टू कूल, ओके, एंड व्हेन दिस कूल्ड दे क्रिस्टलाइज्ड, and when they crystallized, there was a contrast in density with respect to lighter elements and heavier elements, right? जो हेवियर एलिमेंट्स था वो तुम्हारा कोर में सेटल हो गया, और जो जो तुम्हारा लाइटर एलिमेंट्स था वो तुम्हारा ऊपर चला गया, राइट? दे फॉर्म अनदर स्ट्रेटिफाइड लेयर. So this way the core is formed with a very heavier elements, iron, nickel, then with magnesium and silicon and other elements made of the mantle, and only silicon oxygen oxide part made the entire crust. This process is the differentiated thing. Do you get it? Yes, sir. Thank you, sir. And if this process was not happened at all, then that term will be known as the undifferentiated. मतलब कोई हमारा stratification हुआ ही नहीं. Okay, so that is an undifferentiated term. Now, ये जब तुम्हारा ये chondrites जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, when we are studying the chondrites, right? So I was explaining about the nature of the chondrites. Now, an experiment was carried out some years ago. The composition of these chondrites and the जो तुम्हारा composition of the photosphere है sun का, from the spectral studies have been tried to correlated, and what we see is, तो हम लोग ने क्या देखा, so there was an exact match of the composition from the photosphere of the sun and from the textural studies of the on the compositional studies of the chondrite, and they seem to be very very correlatable, in fact same. So it tells us that chondrites represents the primitive composition of the solar system, and it is fairly well resembling with the composition of the photosphere of our sun. Okay, so that is why chondrite gives us the uh, composition of the solar system, the primordial composition of the solar system. And due to its clastic sedimentary nature, it has been stated that it is an undifferentiated meteoroid. Now, if question comes, what is a chondrite, and what are the uh, textural relationship in a chondrite, right? Textural relationship, and why it is called undifferentiated meteoroid. I think you all will be able to answer the question, right? Why it is undifferentiated, I think the concept is very clear to all of you. Yes, sir. Okay, now we will come back to the our planetary system Earth. Now, so you know the processes of the gravitational process, then you also know about the kinetic process, and you also known as the process of converting into the heat energy, right? Now, tell me one thing, what are the mode of transportation of heat energy from one particle to another? Can you tell me at what mode we can transport the heat from one body to another? So radiation, Yes, conduction, convection. yes, radiation, convection,
and And conduction. yes, Conduction. exactly. Now, so you know that heat has been generated from the gravitational energy. Now, so do you ever think what will happen to this heat energy? Because आप अगर किसी भी body को, for an example, if you are taking a body and you are heating that body, will the heat remain in that body, or the body will liberate its heat? It will obviously liberate its heat, right? Because a system or a body will become very very unstable if you provide some external energy to it, because it is a basic universal nature that कोई भी body, कोई भी system in this universe try to stabilize itself, right? सो अगर तुम कोई भी सॉसपेन को हीट करते हो, व्हेन इट इज connected with the surrounding, or when it comes in contact with the surrounding, it immediately liberates its heat, it loses its heat, right? So earth is also a body which is present in a system. That system is the solar system, and with the surrounding is the solar system, and earth is a body in the solar system, right? So अगर जब अर्थ जब when earth first produced, due to, and the heat energy is uh, relocated into its center, so it is very obvious that it will try to liberate its heat energy from its core towards the outer part, right? Yes, sir. Now here comes the concept that when the earth first created at some point in geological time, let's say 4.6 billion years ago, it has been created by the process of accretion. और ये एक्रीशन की वजह से जब पार्टिकल्स वर ट्राई टू वेर स्टिकिंग विथ वन अनदर, सो तब क्या हुआ, देयर वाज हीट एनर्जी ड्यू टू दिस कोलिशन, एंड दैट वेरी हीट एनर्जी हैव बीन कंसेंट्रेटेड इन द कोर ऑफ द अर्थ आल्सो, ओके? उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन के लिए क्या हुआ, हम लोगों का मैंटल जो है, देयर इज अ डिफरेंशिएटेड मैंटल, एंड फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन होने के बाद क्रस्ट फॉर्म किया, ओके? सो दैट्स हाउ द क्रस्ट, मैंटल एंड कोर came into existence. Now what will happen to the heat energy that is relocated at the center? तो क्या होगा उस हीट एनर्जी का जो हमारा सेंटर में है अर्थ का? The heat energy will try to escape from the earth's core, okay? Now ये कौन सा प्रोसेस में एस्केप होता है, कैन यू टेल मी at what is the process through which the heat energy of the earth try to escape? सर वोल्कानिज्म हो गया. Yes, exactly. Volcanism is a process, but what is the mechanism that is that drives this heat energy? It's सर प्लेट टेक्टोनिक. yes, but how? My question is how. See, देखो, I have previously what I have told you that this Earth is a body, okay, and this is present in a system. The system is the solar system, and solar system का जो टेम्परेचर है, the temperature is 3 to 4 Kelvin, and Earth का जो टेम्परेचर है, that is around 6000 degree Celsius, okay, core का around. So let's say it's a 7000 Kelvin. So heat कैसे फ्लो होता है, और कोई भी चीज कैसे फ्लो होता है, how anything flows, if there is a higher potential and if there is a lower potential. So the always remember this, any particle or any fluid or anything will always flow from the higher potential to the lower potential, right? यस सर. So if you have a tank of water which is filled up to 20 liters, and if you have a tank of water and if you have gradient like this, ठीक है, और ये तुम्हारा ये जो टैंक है ये तुम्हारा हाइट है, सपोज this tank is at a height of 100 meters and this tank is at a height of 50 meters, and ये जो तुम्हारा टैंक है इसमें 5 लीटर वाटर है, ओके? सो व्हाट विल हैपन, if you will connect these two tank with a channel, the water will flow from the tank which is at a higher elevation and towards the tank which is at a lower elevation, ठीक है? So कोई भी चीज तुम्हारा ऐसे करके फ्लो होता है from higher potential to the lower potential. The same goes for heat energy as well.
right? So heat will flow from the higher heat energy to the lower heat energy, that is towards the cosmos. So the process which it flows from the higher to the lower is by the mechanism of radiation, mainly by the radiation. Okay, और इस रेडिएशन प्रोसेस को तुम्हारा और भी वे फॉरवर्ड करने के लिए जो तुमने जो प्रोसेस बोला, दैट इज वॉल्केनिज्म, that is plate tectonics. These are the operations which are in use or in process to convey this entire exchange of heat. So do you get it? And the major role is played by the plate tectonics. Now the question is, what are the zones where the high heat flow will occur? Can you tell me what will be the prominent zones? Yes, सर जो वीक जोन होगा अर्थ के सरफेस पे, जो एक्टिव जोन होगा जहाँ पर प्लेट exactly. ज्यादा ऊपर है। Exactly. So these are my plate boundaries. So plate boundary are the uh, locations where there will be higher heat flow values. So this is way plate tectonics is nothing but a process of losing of Earth's internal heat. Okay. The majorly is by the help of radiation, but there are processes such as convection as well. And this convection is set up at the between the crust mantle boundary, right? And in this part, that is the mantle core boundary. क्योंकि यहाँ पर हम लोग का D double prime layer है, also known as the ULVZ, and here is LVZ. So these are the two prominent zones of convection, right? And due to this convective circulation, हम लोगों का जो अर्थ का जो मेंटल है और ये जो सबडक्शन सिस्टम है, और यू कैन सी द प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम is only living due to this convective process. Okay, now so I have talked previously about the process of differentiation, right? Now can you tell me, so if there is differentiation and melting occurring simultaneously at the subsurface, so चलो हम लोगों ने तो देख लिया जो मेंटल का जो कॉम्पोजिशन है वो हम लोग का पेरिडोटिक कॉम्पोजिशन है, राइट, पेरिडोटाइट। एंड जो कॉन्ड्राइट्स का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज आल्सो रिजेंबलिंग पेरिडोटाइट, बट इफ वी मेल्ट दिस पेरिडोटाइट, what we will get? Yes, anyone? सर सर पायरोलिटिक कंपोजिशन मेल्ट हाँ, पाएंगे। yes, yes. पायरोलिटिक सर पायरोलिटिक Yeah, pyrolytic is fine, that will be composed of pyroxene and olivine, but what is the rock that will form from the melting of peridotite? सर क्वेश्चन समझ में ऐसा थोड़ा कैसे बोलेंगे। अगर तुम्हारा पास, if you have a peridotitic rock, okay, and you are melting this peridotite, then what are the processes that will be operated after during this melting? There will be fractionation, right, and differentiation. यस So सर। अगर तुम्हारा फ्रैक्शनेशन एंड डिफरेंशिएशन हुआ, पेरिडोटाइट का जो सबसे हेवियर पार्ट है वो तुम्हारा सबसे पहले सेटल करेगा, देयर विल बी अ रेसिड्यू, यस सर। एंड देयर विल बी अ पार्ट व्हिच इज स्टिल द मेल्ट। ओके, तो ये मेल्ट जब क्रिस्टलाइज फिर से करेगा, व्हेन दिस आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ द पेरिडोटाइट, जब तुम्हारा रेसिडुअल पार्ट सेपरेट हो जाएगा, व्हेन द रेसिडुअल पार्ट ऑफ द पेरिडोटाइट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेल्ट, then the melt will form another layer and it will try to crystallize. That crystallized part will be your basalt,
right? Yes, sir. Yes. That's what I was looking for, basalt. And now when you melt this basalt, and when again that melt will recrystallize, from that basalt क्या generate होगा? सर बासाल्ट का तो शायद से सर कंपोजिशन प्लेजियोक्लेस एंड पाइरोसिन आएगा. ये प्लेजियोक्लेस एंड पायरोक्सिन, बट तुम्हारा सबसे पहले कौन सेटल कर जाएगा? पायरोक्सिन सेटल कर जाएगा। पाइरोसिन से डील कर जाएगा, प्लेजियोक्लेस रुक जाएगा. एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हारा जो कॉम्पोजिशन आएगा वो एक ग्रेनिटिक कॉम्पोजिशन आएगा, क्योंकि प्लेजियोक्लेस और यस सर. क्वार्ट्ज सिर्फ डोमिनेट करेगा, राइट? यस सर. That's what I was looking for. So now you know that how the there is two type of crust. One is the sialic crust and the sematic crust. एक में तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक तुम्हारा ओशनिक क्रस्ट कैसे फॉर्म हुआ पता चल रहा है? यस सर. यस सर. Yes, so this is the process of how the planet Earth has actually been created. So तुम्हारा एकदम from the creation of elements to the differentiated core, mantle and crust. और ये जो तुम्हारा fractionation process है, जो melting process है, it's a continuous process. Okay? एंड ये प्रोसेस तुम्हारा चल रहा है, इसीलिए तुम्हारा वॉल्केनिज्म हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा प्लेट तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक्स अभी भी अलाइव है, ड्यू टू दिस रीजन. ओके, एंड इट इज नथिंग बट ए mechanism of losing the heat, and it entirely is connected. This is a cyclic process which is known as the plate tectonics. Tectonics refer to the architecture, and the geodynamics are the processes which are operated to satisfy the architecture of the earth. Okay, now, so we have basically entered into the realm of plate tectonics finally. Now, so we will discuss about the plate boundaries, which are also very essential. So we all know there are three type of plate boundaries. One is the convergent boundary, second is the divergent boundary, and third is the transform boundary, right? So the question is, in convergent boundary, what is the process occur at the convergent boundary? Is there is uh, uh, conserving of the plates, or destruction of the plates, or recreation of the plates? Can you tell me which phenomenon will सर occur? सर Yes, डिस्ट्रक्शन ऑफ. yes. The convergent boundary is associated with destruction. The divergent is associated with the construction of the plate, and the transform is associated with the conservation of the plate. Yes, अंकित, तुमको समझ नहीं आ रहा है? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज थोड़ा माइक ऑन करके बोलो. आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू. या अंकित. Okay, I am repeating this. So there are basically three types of plate boundaries. One is the convergent plate सर boundary. ये कॉन्ट्राइट क्या होता है? Okay, chondrite is a meteoroid, अंकित. Okay, chondrite हम लोगों का एक अनडिफरेंशिएटेड meteoroid है, ठीक है, जो सर मीटेराइट क्या होता है? okay, meteoroid है. meteoroid is a substance which is not of a part of the earth. Okay, जो तुम्हारा अर्थ का पार्ट नहीं है, मतलब वो कोई भी टेरेस्टेरियल रॉक्स का पार्ट नहीं है. meteoroid, it has come from the outer space. Okay, अंकित, यस सर. यस that सर. is that is a meteoroid. Okay, वो meteoroid एक तुम्हारा कोई भी सॉलिड पीस हो सकता है, मतलब इट्स एन ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम एन आउटर स्पेस. वो तुम्हारा कॉमेट हो सकता है, एस्टेरॉयड हो सकता है. एस्टेरॉयड दैट इज तुम्हारा जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आता है, हम लोगों का जो टेरिस्टेरियल प्लेनेट है और जो जोवियन प्लैनेट्स है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, मतलब डेब्रीज ऑफ रॉक्स. फ्रॉम दैट समटाइम्स क्या होता है,
प्लेनेटरी का हर एक प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके वजह से जो बॉडी हम लोग का आ जाता है वो लोग हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। सो इट्स नथिंग बट अ डेब्रिस, अ सॉलिड पीस ऑफ रॉक व्हिच हैव केम फ्रॉम द आउटर स्पेस। ओके, नाउ एज वी, Okay. ओके, सो हम लोगों का प्लेट जो बाउंड्री होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ओके, द फर्स्ट इज द convergent boundary, second is the divergent boundary, and third is the transform boundary. In convergent boundary, there is a destruction of plates. For an example, suppose this is a plate A and this is a plate B. When this plate A and plate B will collide with each other, क्या होगा, ये जो प्लेट A है, ये जो प्लेट B है, ये ऐसा अपलिफ्ट होना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो जोन हम लोगों का फॉर्म करता है, जैसे कि हम लोग ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, सो ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन वी बेसिकली सी माउंटेन्स और ओरोजेनिक बेल्ट्स। ओके, एंड दिस पार्ट is called suturing. Okay, and if when two plates, so this is a plate C and this is a plate D, when they will move apart from each other, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से ऐसे करके हटने लगेंगे, when they will be separated by the tensional force, then क्या होगा, नीचे से जो मैग्मा है ये ऊपर आएगा, ये ऊपर होके ऐसे ऐसे लेयर में रहेगा, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिस्टलाइज। सो देखो, जब 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 ये क्रिस्टलाइज करेगा, ये जो प्लेट का साइज है, ये प्लेट का साइज इंक्रीज करते रहेगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज, सो देयर इज मेकिंग ऑफ न्यू प्लेट। सो तुम्हारा नया प्लेट एडिशन हो रहा है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट, दैट इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तुम्हें कोई फॉल्ट पकड़ लो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लेट इस तरह मूव कर रहा है, ये प्लेट इस तरह मूव कर रहा है, सो दिस मूवमेंट, सो अगर कोई भी इंसान इस पोजीशन पे खड़ा है at this position and he is observing, this is plate E, this is plate F, कोई तुम अगर प्लेट, if you are standing in the plate F and you are facing towards plate E, then you will see that plate E is moving right hand side with respect to plate F. Okay, this is a transform boundary, और कभी इस ऐसे अगर हम लोग कोई फॉल्ट जोन देखते हैं, इन लोगों को हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। ओके, नाउ this motion, basically this motion is a dextral motion. Dextral means is a right lateral. अगर तुम ऐसा एक बाउंड्री था, and if you are standing here and if this plate is moving, E is moving towards the left side and F is moving towards the right side, अगर तुम F में खड़े हो, so this motion is the sinistral motion, means respect to your plate, the opposite plate is moving towards the left hand side. This motion is called the sinistral motion, the left lateral. Okay, ये सब एग्जांपल हम लोग देख पाते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में। ओके, नाउ सो हम लोग क्या करेंगे अभी, सो एंड आई एम टेलिंग यू द नोमेनक्लेचर्स ऑफ द प्लेट्स, दैट इज ये जो साइन है, दिस साइन इज द, ये साइन पता है क्या, एनीवन? So divergent. एग्जैक्टली, एंड दिस साइन, Sir, convergence. एग्जैक्टली। ओके, सो टेल मी वन थिंग, तो तुम लोग ये पहचान सकते हो कि कौन सा डाइवर्जेंट है, कौन सा कॉन्वर्जेंट है। सो ये जो सेकंड केस है, ठीक है, ये तुम मुझे एक चीज बताओ, सो आई देन आई विल नो दैट इट इज क्लियर टू यू। सो टेल मी दिस फॉर दिस सेकंड केस, that is A and B, which one is the overriding plate and which one is the subducting plate? Can you tell me? सर जिसकी तरफ माउंटेन रेंज होगा वो शायद से ऊपर होगा। Exactly, मतलब बोलो, B क्या है, B बी। तुम्हारा, बोलो। सर बी अपलिफ्ट होगा ए के ऊपर। Exactly, so B is the overriding plate. यस सर।
and A is the subducting plate. ओके, सो ये सबको समझ में आया, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? ओके, एंड दिस इज द साइन ऑफ द ट्रांसफॉर्म. गेट इट? नाउ we will jump to some numericals, ठीक है? So we will see a two plate system. This is a plate A and this is a plate B. Now, okay, acha, so tell me, this is a two plate system, okay? The plate B is entirely surrounded by plate A, and from the information what I have drawn on the screen is that जो मिड ओशनिक रीज है, ठीक है, मतलब देयर इज ए क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेट which is at a 2 centimeter per year. Now my question is, will the plate geometry change? Come on, anyone? Or it will remain the same? What will happen to the plate system? Yes, 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 Monu, or anyone? Abhishek, Abha. सर बी का साइज साइज से बढ़ेगा. सर ए और बी के बीच में सर गैप बढ़ेगा अगर न्यू प्लेट क्रिएट होगा तो फिर. Okay, so you are telling that, but Munu, okay, or anyone, so everyone agrees with him, or ऐसा कोई है जो उसके साथ disagree करता है? Anyone in this? सर सर हाँ हाँ, सर बोलो बोलो. चेंज होगा सर. Okay, so you are telling change होगा, but so okay, but कौन सा तरफ change होगा? मतलब बोलो दिव्य रंजन, तुम्हारा प्लेट ए भरेगा या फिर प्लेट बी भरेगा, कौन सा भरेगा? सर दोनों साइड तो है. हाँ हाँ, सो देखो, यहाँ पर एक एक चीज मिसिंग है, तो तुम कोई भी एनीवन फ्रॉम फ्रॉम दिस ग्रुप मुझे बता सकता है कौन सी चीज मिसिंग है? व्हाट इज द मिसिंग थिंग? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है? देखो, सो तुमको सो व्हाट इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ये कितना होगा? इसका एक नंबर मुझे दो. टेल मी एनी नंबर, क्या होगा? इस इंफॉर्मेशन से ये तुम कह सकते हो कि प्लेट बी प्लेट ए के रिस्पेक्ट में कितना सेंटीमीटर मूव करेगा. एनीवन? सर सर 4 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज ए रिलेटिव मोशन. देखो 4 सेंटीमीटर कैसे हुआ, सब लोग समझो, ठीक है? हाउ इट हैड बिकम 4 सेंटीमीटर. सो प्लीज देखो, दिस इज द मिड ओशनिक रीज, ठीक है? ये एक मिड ओशनिक रीज है. ये राइट हैंड साइड में 2 सेंटीमीटर पर ईयर करके ग्रो कर रहा है, एंड इट इज लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 सेंटीमीटर पर ईयर करके ग्रो कर रहा है, ठीक है? सो द नेट प्रोडक्शन ऑफ अ प्लेट इज 2 + 2 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक बी प्लेट है और ये ए प्लेट है. ये इस तरफ 2 सेंटीमीटर जाएगा और बी इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर जाएगा. जो टोटल जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 + 2 4 होगा, 4 सेंटीमीटर. सो द रिलेटिव मोशन विथ बी का जो रिलेटिव मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 4 सेंटीमीटर
per year. Okay, but जो information missing है, the information which is missing in this question is कि बी कौन सा साइड सबडक्ट करेगा या फिर ए कौन सा साइड सबडक्ट करेगा। ओके, ये मैंने तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि अगर इसमें से क्लियर है ये डायग्राम से, मैं और एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। आई थिंक सॉरी फॉर द बैड डायग्राम। ओके, सो इफ ये 2 सेंटीमीटर इधर मूव कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर इधर मूव कर रहा है। ओके, सो ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है। सो प्लेट बी इस तरह मूव करेगा क्योंकि इसका जो प्लेट बी का डायरेक्शन ये है, एंड प्लेट ए जो है होगा ये इस तरह मूव करेगा। ओके, सो ए वी बी मतलब है द मूवमेंट ऑफ प्लेट बी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर ईयर। बट अगर मैंने बोला इफ आई गिव द इंफॉर्मेशन दैट द सबडक्शन इज लाइक दिस वे, नाउ आई वांट टू हर्ट ऑल ऑफ योर आंसर। अब मुझे बताओ क्या होगा। एनीवन? सर अगर 20 हाँ? सर अगर बी ए के अंदर है तो फिर सर बी प्लेट का डेंसिटी सर तो ए से कम होगा। नहीं नहीं, अभी डेंसिटी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेंसिटी। मैंने तुमको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ये इस तरफ होगा, ठीक है? तो प्लीज टेल मी कि बी बढ़ेगा या फिर ए बढ़ेगा, क्या होगा? सर बी ओवरराइड होगा। ओके, सो यू आर सेइंग बी ओवरराइड होगा, बट हाउ इज दैट पॉसिबल दिव्य रंजन? देखो, ये तुम्हारा मतलब होता है कि ये अगर ए है, ये बी है, इसका मतलब है जिस तरफ तुम्हारा ये पॉइंट रहेगा, मतलब है ए सबडक्ट हो रहा है, बी ओवरराइड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा बी तुम्हारा जो है ये तुम्हारा सबडक्ट कर रहा है, ए ओवरराइड कर रहा है। यस सर। सो डू यू ऑल एग्री विद मी? कोई भी यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? बट ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर ऐसे करके आया कि ये तुम्हारा प्लेट है और तुम्हारा ऐसा सेटअप तुम्हारा ऐसा है, योर सेटअप इज लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, इट इज 2 सेंटीमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा हाफ स्प्रेडिंग रेट है, योर हाफ स्प्रेडिंग रेट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड तुम्हारा जो बी है ये क्या हो रहा है? ये अभी ओवरराइडिंग प्लेट है, ए सबडक्ट कर रहा है। योर ए प्लेट इज subducting beneath the plate B, right? यस सर। Now, the geometry will evolve like the geometry will evolve like the plate B will tend to become larger with time, ठीक है? क्योंकि ए तुम्हारा 4 सेंटीमीटर पर ईयर से सबडक्ट कर रहा है। ओके, ए इज सबडक्टिंग एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर ईयर, एंड ऑन द अदर हैंड द प्लेट बी इज ऑल्सो मूविंग एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर ईयर with respect to A, but the creation of the mid oceanic ridge is 2 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 सेंटीमीटर प्लेट भी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ए तो तुम्हारा सबडक्ट कर रहा है, ठीक है? और इस केस में क्या होगा? इस केस में तुम्हारा 2 सेंटीमीटर करके ये जो प्लेट है ये छोटा होता जाएगा। द प्लेट बी विल टेंड टू बिकम द प्लेट बी विल टेंड टू become shorter by 2 centimeter. Is it clear or not for this case? यस सर। So what it means is
it completely depends on the direction of subduction. Okay, so हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, what is convergent, what is divergent, but we do not talk about the direction of the plate motion. So from this uh, experiment we can say the direction of plate motion is a very very important factor. ठीक है, so हम लोग जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना, we have to reconsider the direction or the vectorial property of plates. Okay, so just remember this in mind. Now I am giving you another example. एक और एक न्यूमेरिकल अभी तुमको दे रहे हैं तुम लोगों को. So tell me, now we will see about a three plate system. Okay, ये टू प्लेट था, we will see a three plate system. This is a drawing. Yes. Yes. I will add a twist in this question. Let's say 6 centimeter per year. Now tell me. So, सर बी का साइज ऐसे सर घटेगा? नहीं नहीं क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन तो करने लिखना दो. So, it is not about nature of the plates. What will be the relative motion of plate B with respect to C? That is, you need to find out. This is a vectorial representation. Okay, so direction is a very important property in case of plate tectonics. Now ये question अब बोलो, तुम लोग बोलो कि मैं कैसे solve करूं. There is enough information. Step by step बताओ. Just try to tell me. I will tell you. Yes, हाँ कोई भी बोलो बोलो. सर बी का सर रिलेटिव मोशन होगा सर ए के, सर बी का 2 सेंटीमीटर, सर 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 थोड़ा दिखाई है सर, 2 सेंटीमीटर लिखा है ना आपने? हाँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. सर बी का होगा 2 सेंटीमीटर। बी जी का सर। बी का 2 सेंटीमीटर मतलब. सर बी का सर रिलेटिव मोशन 4 होगा ए सेंटीमीटर से। पर ईयर। हाँ बोलो बोलो. वन बाय वन. 4 सेंटीमीटर सर। एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर. यस, देयर विल बी 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर किसका होगा? बी के साथ ए का रिलेशन ना. ये सर। एग्जैक्टली. सो हम लोग ये लिख सकते हैं. हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन, कोई कुछ बोल रहा है? सर बी का सी के साइड से भी सर वो सर 6 सेंटीमीटर कन्वर्ज हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर ये साइड से सर। नो, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ. तो दिव्य रंजन ने सही बोला कि जो तुम्हारा प्लेट बी होगा वो ए के रेस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर होगा. रिलेटिव मोशन एग्री करते हो तुम लोग? एवरीवन, डायग्राम देखो. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये सर। ओके. सो तो दिव्य रंजन, तो मैं या भी कोई भी स्टूडेंट, तो इस मैं टर्मिनोलॉजी को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ. देखो तो एक बार. ए वी बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वी बी ए. ये मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ये सर। ये तुम्हारा एक वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है. तुम लोग सब क्लास 12 में पढ़े हो कि अगर मैं कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ तो तुम्हारा जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाएगा. यस सर, यस सर। ओके. नाउ मेरा जो क्वेश्चन था, ये है मेरा क्वेश्चन. ओके, व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी. नाउ तुम लोग ये चीज देखो तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं. सी वी बी इक्वल्स टू सी वी ए प्लस ए वी बी.
कैन आई राइट दिस वन गाइस? यस सर। सबको समझ में आया ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा? सब बोलो यार, कोई एक मत बोलो प्लीज, एवरीवन, इफ देयर इज एनी डाउट। देखो, ये ए वी बी है, ये सी वी बी है, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इस कंपोनेंट को तोड़ दिया। मतलब तुम्हारा सी बी को मैंने ऐसे करके लिखा, सी ए प्लस ए बी। ये जो ए पार्ट है ये एक्चुअली वेक्टोरियल में कॉमन हो जाता है अगर तुम वेक्टोरियल का इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है? तो ये क्या होता है, तो सी बी इक्वल्स टू इधर भी सी बी हो जाता है, ठीक है? ये समेशन तुम्हारा सेम हो जाता है, दिस समेशन इज सेम एज सी बी, ठीक है? सो देखो, तो हम लोग के पास क्या है, सी वी ए, ये भी हम लोगों के पास है। ये वैल्यू कितना होगा, कोई भी बोलो? व्हाट इज द मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी? देखो ये गिवन है इधर। सर 4 सेंटीमीटर होगा ये भी साइड से। नहीं, ये 4 सेंटीमीटर कैसे होगा, ड्राइंग में सर बी का सर बी का अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो फिर सर अगर दोनों प्लेट कन्वर्स करेंगे सी और बी, सर तो देखो फिर रिलेटिव मोशन। देखो, ये मैंने तुमको पूछा व्हाट इज द मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, ये तो मैंने गिवन है ना। सॉरी सर, सर 6 सेंटीमीटर हो रही है। एग्जैक्टली ये तो गिवन है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, यस सर। देखो, सर मैंने बी का नहीं। ओके ओके, सॉरी। देखो, नहीं कोई बात नहीं। देखो ये तो, ये जो जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को कोई भी मतलब आ सकता है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो एक रीजन है तुम्हारा, ये रीजन एक रीजन हो गया, फिर ये जो रीजन हो गया, ये रीजन और एक रीजन हो गया, ठीक है? इस, जब तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ना, जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आई मीन द डायग्राम। द डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके? सो सीवीए हम लोगों का मिल गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सीवीए, तो ये मिल गया। और एबी भी हम लोगों के पास पता है, एबी भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, सी वी बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो डू यू गेट इट गाइस, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? एवरीवन? यस सर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, और एक जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ए थ्री प्लेट सिस्टम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। What will be the nature of the plate boundary between B and C and the rate between B and C? ठीक है? सो बोलो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा?
एनीवन? दिख रहा है ना क्वेश्चन? तुम लोग कॉपी में पहले ड्रॉ कर लो क्वेश्चन को। दिस इज 3 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, सब पर ईयर, पर ईयर। गाइस एवरीवन कैन सी इट ना? गाइस एनीवन इज देयर? yes sir, yes. ओके ओके, तुम लोग पहले ड्राइंग कर लो, थोड़ा सोच लो 1-2 मिनट इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। चलो, एनीवन, सिर्फ एक पर्सन नहीं, एनीवन कैन जॉइन दिस कन्वर्सेशन, जस्ट ट्राई, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर शायद 2 सेंटीमीटर होगा। आंसर यस सर। कैसे किया तुमने? प्लीज थोड़ा थोड़ा बताओ मुझे, आई विल ड्रॉ विद यू, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप बताओ। देखो पहले यू हैव टू थिंक व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर गिवन, ओके, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये देखो ये तरीका होता है, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट सी व्हाट आर द थिंग्स गिवन, सो यू ऑल नो कि द रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट गाइस? Yes sir. ओके, अनदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या है बोलो? सर वो बी और सी का, सॉरी सर ए और सी का एग्जैक्टली, ये भी तो 3 सेंटीमीटर रिलेटिव, सर सॉरी 6 सेंटीमीटर होगा सर, रिलेटिव मोशन। एग्जैक्ट नहीं 6 सेंटीमीटर नहीं, ये देखो ये मतलब सर ये सर, सर वो अपोजिट साइड से भी सी भी मूव करेगा ना, या फिर? नहीं, ये तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है ना, ये देखो, दैट इज द कंफ्यूजन। ये जो मिड ओशनिक रीज है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, ये तुम्हारा प्लेट क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर ये तुम्हारा पॉइंट है तो तुम इस साइड भी सेम जा रहे हो, इस साइड भी सेम जा रहे हो, लेकिन ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इफ दिस इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ये अगर ये पार्ट, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे भी सेम पार्टिकल है, तो ये तो दो एक साल बाद अगर ये 2 सेंटीमीटर मूवमेंट हुआ, तो ये पार्टिकल इधर नहीं रहेगा, ये पार्टिकल इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये पार्टिकल इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे जो गैप है ये बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टिकल जो तुम्हारा है ये तुम्हारा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिएशन नहीं होगा, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन लेकिन इधर क्या होगा, अगर ये जो तुम्हारा लाइन है ये इधर अगर 2 सेंटीमीटर मूव कर गया, तो यहाँ पे नीचे से क्या होगा, मैग्मा आएगा, तो मैग्मा आके यहाँ पे वो क्या करेगा, कलेक्ट होगा, तो ये क्रिस्टलाइज करेगा, तो यहाँ पे भी ये सेम लाइन बना देगा, समझ रहे हो?
इट इज yes क्लियर? sir, yes sir, दिस इज yes द sir. पॉइंट। और ट्रांसफॉर्म फॉर्म में तुम्हारा कुछ क्रिएट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्म फॉर्म में जस्ट इट स्लाइड पास्ट वन अनदर, देयर इज नो क्रिएशन। ठीक है, तो ओनली दिस, जब तुम्हारा मिड ओशनिक रीज में तुम जब ये बाउंड्री कंसीडर करोगे तभी तुम्हारा रिलेटिव मोशन में 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक मिड ओशनिक रीज है, लेकिन ए और सी के बीच में कोई मिड ओशनिक रीज नहीं है, इसीलिए ये 3 इंटू 3 इंटू एक्स नहीं होगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes sir, yes. Here x is the half spreading rate. Okay, only in case of mid oceanic ridge there will be half spreading rate. I mean there will be a multiplication factor, but in case of any other boundary there will be no half spreading rate, क्योंकि half spreading rate is a concept for only divergent boundary. Is that clear to all of you? So यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 3 सेंटीमीटर होगा जो तुम्हारा ये होगा ए सी। ठीक, नाउ देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबने क्वेश्चन कॉपी में ड्रॉ कर लिया ना एवरीवन? यस सर। ओके, यस देखो 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 हम लोग क्या करेंगे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जियोमेट्रिकली। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक 2D पेपर में हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ है वी आर कंसिडरिंग अर्थ एज ए फ्लैट सरफेस। ओके, अर्थ स्फेरिकल है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, वी ऑल नो दिस, एवरीवन नोज दिस। ठीक है, बट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी अज्यूम दैट अर्थ एज अ फ्लैट सरफेस, क्योंकि हम लोग एक 3D को ऐसा करके 2D में दिखाने के लिए कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। सो इट विल कंसीडर अर्थ एज अ फ्लैट सरफेस। नाउ लेट अस कंसीडर, तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, वी विल टेक द पॉइंट ए। ओके, लेट्स टेक द पॉइंट ए। नाउ हम लोग क्या क्या बोले कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का न्यूमेरिकल है ये हम लोगों को वेक्टर कंसीडर करना होगा, मतलब एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कंसीडर करना होगा। ठीक है, सो सो कोई मुझे बताओ ये ए है, सो नहीं हम लोग क्या करते हैं, ए से नहीं, हम लोग अगर ए से करेंगे तो ड्राइंग को उल्टा करना होगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू को माइनस से कैलकुलेट करना होगा, तुमको अभी पता चल जाएगा। तो हम लोग चलो ए और सी का रिलेशन है, हम लोग सी को लेते हैं। सो हम लोग वी आर टेकिंग अ पॉइंट सी, हम लोग सी को एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो तुम मुझे बताओ कोई भी एक सी के रेस्पेक्ट में, देखो डायग्राम देखो, सी अगर कोई भी एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए कौन सी तरफ मूव करेगा, सपोज मान लो ये नॉर्थ है, ए का मूवमेंट क्या होगा सी के रेस्पेक्ट में, एनीवन? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मतलब द प्लेट ए इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट सी, ए विल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। तुम लोग एग्री करते हो मेरे से या फिर नहीं? Yes sir. सो इस सी के रेस्पेक्ट में मैं एक नॉर्थ में ऐसे करके एक लाइन खींच सकता हूं और यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? Yes sir. ओके, अब तुम मुझे बताओ मुनु, ये जो ए है इस ए के रेस्पेक्ट में बी कौन सा साइड मूव कर रहा है, डायग्राम को देख लो। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसके रेस्पेक्ट में बी कौन सी तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, Yes sir. बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। सो बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, आई कैन राइट दिस, आई कैन ड्रॉ दिस, राइट? Yes, yes sir. नाउ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, बी और सी के बारे में, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था बी और सी के बारे में। ओके, सो तुम इस दोनों को अगर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, देखो और एक चीज मैं बताता हूं, द एरोहेड, दिस एरोहेड will mark
the direction of the plate where the point is. मतलब अभी जो तुम्हारा पॉइंट जो हम लोग कंसीडर कर रहे थे, ये एरोहेड अभी बी की तरफ है। मतलब क्या है, जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम्हारा अभी बी प्लेट पे है। ओके, सो तुम एक चीज देखो, ए और सी का जो वो है हम लोग ने निकाल दिया था, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और ए और बी का जो डिस्टेंस था वो भी हम लोग ने निकाल दिया था 4 सेंटीमीटर। सो अब मुझे बताओ सी और बी का जो होगा रेट होगा, क्या होगा? अब तो सब कर सकते हो, बताओ। जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पुट करके एग्जैक्टली। 7 हाँ, बोलो। देखो तुम लोग ट्रायंगुलर लॉ यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री कॉन्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है, ये अभी 90 डिग्री हो गया है। तो तुम लोग अभी वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अभी तुम वेक्टर करो या फिर ट्रिग्नोमेट्री करो तो कोई बात नहीं, तो हाइपोटेन्यूज तुम निकाल सकते हो। सर 5 5 एग्जैक्टली सर 5 5 होगा। सेंटीमीटर, वेरी गुड। एग्जैक्टली, मोनू एंड दिव्य रंजन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये अगर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हुआ, देखो ये तुम्हारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। सो हम लोग ने रेट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। वी बी सी इसका जो रेट है ये 5 सेंटीमीटर है। वेरी गुड गाइस, इट्स अ 5 सेंटीमीटर। तो लेकिन मैंने और एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्लेट बाउंड्री। मतलब नेचर ऑफ द प्लेट बाउंड्री मीन्स व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्लेट बाउंड्री, नेचर ऑफ द पीबी प्लेट बाउंड्री। ये कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा और ट्रांसफॉर्म होगा, ये बताना पड़ेगा मुझे। ये बताओ, अब तुमको पता चल गया यहाँ का 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब तुम बताओ इस क्वेश्चन से, इसको अच्छे से देखो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्लेट बाउंड्री। बहुत अच्छे से सोच के बताना, ठीक है। ये प्लीज ये गलती मत करना, बताओ, सोचो एनीवन। अगर तुम ये बता पाए तो इसका मतलब तुम इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा वो तुम सॉल्व कर सकोगे। सर अगर सर आप जो आपने जो बोला कि वो जो सर सी का पॉइंट था, अगर वो बी प्लेट को शिफ्ट हो गया है, हाँ हाँ। सर तो फिर क्या वो सर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगा? ओके ओके, यू आर करेक्ट, बट कैसे, हाउ हाउ, ये तो तुमने ठीक सर किया। सी हाँ सर सी का सर अभी आपने बोला ना जो सी के ऊपर पॉइंट था, हाँ फाइनली वो बी प्लेट के ऊपर चला गया। सर अगर सर डाइवर्जेंस पे यूज होगा तो फिर वो पॉइंट सी प्लेट भी रुकेगा, एग्जैक्टली क्योंकि वो सी। एग्जैक्टली। तो सो प्लीज लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। तो ये तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, ये जो तुम्हारा एरो है, मतलब ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ शो कर रहा है, ठीक है। सो कैन आई टेक दिस एरोहेड एंड कैन आई पेस्ट दिस एरोहेड हियर? मैं इस एरोहेड की ले जाके यहाँ पे ऐसा करके बैठा सकता हूँ कि नहीं? टेल मी यस सर। नाउ। ये अब कॉन्वर्जेंट कैसे हुआ देखो। अब सी और प्लेट का जो रिलेशन होगा, सो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो ये सी प्लेट इधर आ रहा है, और ये जो बी प्लेट ये ऐसे करके आ रहा है, तो एट दिस पॉइंट these two plate will collide, yes or no? यस सर। So this collision, due to this collision, now due to this collision, this will be a convergent boundary. So the nature is convergent, right? यस सर। Okay, so देखो, तो कोई भी हो, दिव्य रंजन, एनीवन, मुनु, अभिषेक, prajna, anyone. So I think guys this type of question are clear to all of you. I think you will all be able to solve this kind of problems, अगर आ रहा है तो। अभा, एनीवन, आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में।
गाइस? यस यस सर। ओके ओके। नाउ हम लोग और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक्स का वी विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। सो तुम लोगों का जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था वीक 2 का, सिर्फ मैंने देखा 2 ही क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। सो आई थिंक वो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर चुके होगा ऑलरेडी, राइट? एनीवन? मुनु, दिव्य रंजन, अभा, कोई भी? सर वो गूगल अर्थ का सर कोई ऐप यूज करने को वो उसमें इंस्ट्रक्शन था। ओके, तो तुम लोग किए हो वो क्वेश्चन गूगल अर्थ करके? नहीं सर मैंने नहीं किया। नो सर, वो नहीं किए हैं। ओके ओके, ठीक है। अगर तुम लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो वो क्वेश्चन मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीक सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? वो कोई लोड नहीं है, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? तो तुम सर लोग उसका सर उसका लास्ट डेट 7 फरवरी शायद से। हाँ हाँ। सर उसका लास्ट सबमिशन डे सर शायद से 7 फरवरी। 7 फरवरी? सर ओके, तो मैं एक काम सर करूंगा। नेक्स्ट। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, उसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन, तुम लोगों को प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल मिल गया था, राइट? यस सर। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को ये क्लास करवाने के बाद, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम लोगों को असाइनमेंट लिस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन ये प्रिपेयर करता हूँ खुद। तो एक काम करूंगा, जो तुम लोगों का जो वो लिंक जो भेजते हैं एनपीटीईएल से, जो रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल, मैं इस वीक का स्टडी मटेरियल में वो डाल दूंगा सोल्यूशन, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो तुम लोग अगर वो देखोगे, इफ यू विल गाइस सी दैट सोल्यूशन, यू विल अंडरस्टैंड. Okay, so because it's a basically a Google Earth program, it's very basic. You will just you will, if you see, you will understand. Is that okay? यस सर। So चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक इजी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? ओके, two, I think. So anyone here is giving jam or gate? Anyone? Monu, Divya Ranjan? Hello? Yes sir, get. Okay, okay. So Munu and Divya Ranjan, you or anyone from this batch are, तुम लोग क्या अंडर ग्रेजुएट हो ना अभी? You guys are अंडर ग्रेजुएट, राइट? नहीं सर अभी एमएससी का फर्स्ट ईयर। ओ, तो तुम लोग का एमएससी का फर्स्ट ईयर हो चुका है। ओके ओके ओके। सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो तुम लोग ने शायद जैम या गेट दिया था, मुनु? डिड यू ऑप्ट फॉर जैम और एनीवन? जैम और गेट? सो आई हैव सर गेट हाँ, बोलो बोलो प्लीज। नहीं सर गेट नहीं दिया था जाम दिया था। ओके ओके, सो ठीक है, हम लोग एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सो देयर आर गाइस फ्रॉम बीएससी एज वेल। वी विल जस्ट वेरी बेसिक, वी विल सॉल्व अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम जैम, इट विल रिकैपिचुलेट योर कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स सपोज एक प्लेट है, ओके? नहीं, आई विल जस्ट नॉट ड्रॉ द आंसर। सो two positions are there on, like two positions are there like A and C on a plate. Those are separated by, let's say, 60 kilometers. The plate velocities are measured at A and C are, let's say, 4 centimeter per year and 5 centimeter
centimeter per year respectively. What will be the distance between A and C in kilometers in 1 million? Please try to solve this question. Suppose this is the continental plate और ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये तुम्हारा ए है ये सी है सॉल्व कर सकते हो guys are you solving this question guys anyone कोई भी मुनु दिव्य रंजन अभा anyone is anyone there हेलो Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग कर रहे हो सॉल्व या फिर मैं कर दूं इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस I think this question might be useful for some of the BSc students also क्योंकि because we have done previously 3 exercises from plate motions which is not a part of the BSc basically some integrated course and in MSc course plate motion का जो sums आते हैं and this is a from BSc part also so anyone कोई भी first step बताओ what is the first step with which we can start Monu Divyaranjan anyone Ipshita so देखो what is the question first सर 69 निकला सर मेरे तरफ से ओके चलो करते हैं ठीक है लेट्स डू इट एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं सो वी ऑल नो दिस फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम ठीक है नाउ जो प्लेट ए है फॉर प्लेट ए वी कैन डू लाइक उसका डिस्टेंस है क्या 4 सेंटीमीटर पर ईयर और देखो ये अगर तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का स्केल है तो इससे थोड़ा एक एक्स्ट्रा जाएगा ये होगा तुम्हारा टोटल 5 सेंटीमीटर ओके सो इसको तुम करेक्ट कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो चलेगा सो हम लोगों ने क्या बोला है 4 सेंटीमीटर पर ईयर और अगर
1 मिलियन ईयर में उसका कितना होगा, राइट? फॉर 1 मिलियन ईयर व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस कवर्ड? तो 4 सेंटीमीटर पर ईयर इंटू 10 टू द पावर 6 ईयर, बिकॉज 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू कितना होगा? 4 सेंटीमीटर पर ईयर इंटू 10 टू द पावर 6, I think it will be like such as 40 kilometer, right guys? yes sir. क्योंकि तुम इसको करोगे तो तुम अगर 10 to the power 5 से कर दोगे डिवाइड तो तुम्हारा हो जाएगा. So 4 into 10 to the power 6 divided by 10 to the power 5 equals to 40 kilometer. Now for plate B also it's 5 centimeter. So 5 into 10 to the power 6 by 10 to the power 5 equals to 50 kilometers. Now देखो, this is we can do it like, ये अगर तुम्हारा ये जो होगा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये मैंने दिया था 60 किलोमीटर. तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? ये तुम्हारा एजम्पशन था हम लोगों का, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर ईयर, अगर वो उसका एक्स्ट्रा हुआ तो. सो ये जो बेस है हम लोगों का, इस बेस और ये बेस हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट एंगल का बेस निकालने के लिए ये अगर तुम्हारा सी है उसको हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं, इस पार्ट को लेट सपोज, तो वो तुम्हारा पूरा टोटल सी हो जाएगा जो हम लोग का निकला था, दैट इज 50 माइनस 40, राइट, इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. नाउ हम लोग को क्या निकलना है, ये डिस्टेंस बाय यूजिंग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं सपोज सी डैश, और इसको ई मान लेते हैं. So if we consider as E, C dash equals to this is also a right angle, under root of, very simple question, 60 square plus 10 square equals to under root of, let's do the calculation. Under root of 3700. So कितना आ रहा है गाइस? मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है. Anyone who have done this? Guys, 60.82. huh? 60.82. 60.82, right? Yes sir. 60.82. Okay, so this is the distance. So do you get it? तो सब लोग का यही है, राइट गाइस? Anyone? So the average distance, the distance between the A and B after the movement of the plates after 1 million year will be 60.82 kilometer. So I guess you can do this kind of problems, right? क्योंकि these kind of problems are easy, and from basic vectorial addition and your using of the Pythagorean theorem, you can be able to solve the basic questions like this, right? And you have to just revisit your concept about vector addition and the vectorial directional properties जो मैंने तुम लोगों को अभी दिखाया, these things,
So from this kind of question, you will able to solve any kind of question in your semester as well as in competitive examination. Okay. So yes. So is it good for you guys? Yes, sir. Okay. So we can end this session today here. Or any more doubts regarding today's session during the numericals or the conceptual parts of plate tectonics, which I have explained you all, the differentiation, undifferentiated things, and how basically from the study of chondrites we can resemble the your uh, primitive composition of the solar system and how plate tectonics works. नहीं सर, बस वही जो असाइनमेंट था Okay, okay. सर, वो Okay, so I will just give you a step-by-step solution. I will just upload it in the Google Drive. Okay, इस okay, okay. So on one thing, excuse me, that is तुम लोगों को जो सेकेंड ईयर का जो सेकेंड वीक का जो कोर्स था वो तुम्हारे लोगों का टेक्टोनिक्स था ना? टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज एंड these are the things, right? मुनु? यस सर। सर Okay, थोड़ा okay. ये सर थोड़ा इग्निस के बारे में था और प्लेट टेक्टोनिक्स सर का। ओके, सो आई विल डू वन थिंग। तुम लोगों का जो इग्नियस का जो कॉन्सेप्ट है, आई विल ट्राई टू जस्ट मेक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इग्नियस पेट्रोलॉजी। आई विल जस्ट, क्योंकि मैन आई वाज जस्ट सीइंग द कोर्स, देयर वर सम बेसिक फ्यू बेसिक थिंग्स ऑफ इग्नियस अबाउट द टेक्सचर्स एंड हाउ द इग्नियस relations are there. So what I think is, I have think that I will made a just material for igneous systems, right? How the igneous systems works बेसिकली, जो तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स ड्यूहेम इक्वेशंस है वो तुम लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। इज इट ओके? और जो एडवांस लीवर रूल यस सर, यस सर। ओके, आई विल जस्ट टीच यू द एडवांस लीवर रूल प्रिंसिपल्स, न्यूमेरिकल करवा देंगे कुछ एडवांस लीवर रूल से। और तुम्हारा जो क्लैपिरॉन्स जो है और जो तुम लोगों का जो सिस्टम का जो इक्वेशंस है जो जनरली तुम लोग अभी इनकाउंटर करोगे, आई विल एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट इग्नियस पेट्रोलॉजी। ठीक है? यस सर। I think that should be fine. Yeah. Okay. So let's wrap this class today. So thank you guys for your cooperation. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर।